हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड नाजुक मोड। मैं हूं उजैर यूनुस और मेरे साथ अंबर शमसी मौजूद हैं। सीधे हाथ पे एंटी करप्शन का फरिश्ता उनके आपको नजर आ रहा होगा, कंधे पे उल्टे हाथ पे मैं उनसे कह रहा था कि तज्जिए का शैतान है वो। आपको अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है। लेकिन पैक्ड एजेंडा है आज। हम बात करेंगे ऑब्वियसली साइफर केस के ऊपर जो स्टोरी आई है कि एफआईए ने चार्जशीट किया है, उसके ऊपर व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, क्या उसकी डिटेल्स हैं, कुछ सवालात हैं मेरे भी जो मैं अंबर से पूछूंगा रिलेटेड टू द रोल ऑफ द मीडिया इन कवरिंग दिस, बट विल कम टू दैट इन जस्ट अ मिनट। और हम बात करेंगे कनाडा इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रोल चल रहा है, उस पे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, एंड वी हैव एन एक्सपर्ट इंटरव्यू विद डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन हु इज अ प्रोफेसर एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी। आई स्पोक विद हिम टू अंडरस्टैंड के हाउ ही सीज दिस इशू। कनाडा की सियासत, इंडिया की सियासत, अमेरिका बीच में इसमें किस तरह नेविगेट कर रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन, विल गेट टू दैट एज वेल। और आखिर में नाजुक मोड की कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू। काउंट हम दोनों ने नहीं रखे हैं बट आज भी एक दो हम इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करेंगे, एंड देन विनर्स एंड लूजर्स। अंबर शुरू करते हैं साइफर केस से। एफआईए ने चार्जशीट किया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि एफआईए फाइंड्स इमरान खान गिल्टी। तो मैं तो अपना सर खुजा रहा था कि एफआईए है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गिल्टी कैसे, वो तो कोर्ट का काम है। तो पहला मसला तो मुझे ये हुआ। दूसरा हुआ कि बेसिकली जो खबर पड़ी डॉन में भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ अगर लोग डिटेल में जाना चाहें। बेसिकली ये विटनेसेस के ऊपर पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन रेस्ट करती है कि विटनेसेस इंक्लूडिंग आजम खान ने जो है वो बयानात दिए हैं खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। तो पहले तो 101 दे दें ऑडियंस को जो फॉलो नहीं कर रहे थे कि ये केस का इशू है क्या और क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। और बताएं कि आपका क्या व्यू है कि हेडलाइन चलाई जब जाती है कि एफआईए ने गिल्टी कर दिया, तो व्हाट डज दैट शो अबाउट द मीडियाज रोल इन ऑल ऑफ दिस एज वेल? उजैर, जाहिर है ये स्पेशली जो केसेस इस किस्म के होते हैं पॉलिटिकली सेंसिटिव भी हो जाते हैं, लीगल केसेस, दैट्स इट्स यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हेडलाइन एंड लैंग्वेज दैट यू यूज। एज एन एग्जांपल, जो पैनामा केस भी चल रहा था, अब हमारे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी ऑन गोइंग केस हो तो उस पे हमें जिस तरीके से पैनामा केस में बात हो रही थी, हर रोज हर हर चैनल उसके डंडोरा पीट रहा होता था कि ये अब कहा और ऐसे कहा और तज्जिए पेश हो रहे थे। और वो जो आपको इस वक्त इमरान खान के केस में नजर आ रहा है कि उनको ट्रायल होने से पहले ही गिल्टी करार दिया गया है, ये तो जाहिर है सरासर गलत है। और हमारी मीडिया बाज नहीं आता। जब नवाज शरीफ के साथ हुआ था तब भी गलत था, और इस वक्त अगर इमरान खान के साथ हो रहा है तब भी गलत है, क्योंकि अभी तो मजीद सबूत पेश होने हैं। आपको याद होगा, जस्ट इज अ बैकग्राउंड के आजम खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बहुत करीब थे, उनकी भी जो कुछ बयानात उनके रिकॉर्ड करवाए गए थे, वो भी कुछ खास लोगों को, एंकर्स को लीक किए गए थे, जो जो काफी डिस्कशन भी इस पे हुई थी कि ही इज टर्न्ड अप्रूवर अगेंस्ट इमरान खान। सो ऑब्वियसली ये विच लीक्स अगेन, हो। सॉरी टू कट यू ऑफ, फॉर द ऑडियंस के ये जब बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं तो ये सीक्रेट होते हैं। ये जिस तरह से लीक किए गए थे बिल्कुल मजाक बनाया गया इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए किसी भी नॉर्मली चले चले, फंक्शनिंग सिस्टम के अंदर। आई विल से कि अगर कोई बहुत चीता किस्म का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था जिसको हासिल हुआ था और फिर आपके ये सामने आए थे, यू कुड एक्चुअली से दैट दे आर शेडिंग लाइट ऑन समथिंग दैट्स ऑनगोइंग, बिकॉज इट इज अ बिग स्टोरी। टू बी ऑनेस्ट, आजम खान टर्निंग अप्रूवर इज अ बिग स्टोरी। आई डोंट सी दैट सो मच एज प्रॉब्लमैटिक। आई थिंक द प्रॉब्लम वाज कि इतने सारे लोगों के पास, अब किस हद तक मैं कह सकती हूँ कि उनको लीक किया गया था, उन्होंने नकल की थी एक दूसरे की। आई एक्चुअली मैं डोंट हैव मैं एनी। कह देता हूँ अंबर के मेरे नजदीक तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आए थे काफी हमारे That's दोस्तों what I से feel. That कि I सबको kind of एक agree ही with मैसेज भेजा गया था कि आपने इस तरह इसकी कवरेज करनी है और ये बुलेट पॉइंट्स हैं। तो मुझे अभी तक याद है कि आई थिंक इस स्टोरी में नहीं, या कुछ पहले हुआ था कि कुछ लोगों ने पोस्ट भी कर दिया था कि वो किस फोन से कॉपी पेस्ट किया गया है। और ये Exactly. पाकिस्तान में सिर्फ नहीं होता, ये मिस्र में एक दफा हो चुका था, विच वाज अ फनी इंस्टेंस कि मीडिया वो पढ़ रही थी एंकर, और एंड में वो पढ़ना रुकना भूल गई कि वो कहाँ से आया है मैसेज। तो सिमिलर इशू हैपेंड विद दिस वन एज वेल, तो भेजा गया Absolutely. था ये।
और जो अल्फाज होते हैं, जिस तरह से उसको फ्रेम किया जाता है, उससे आपको साफ जाहिर होता है कि ये क्लियरली नैरेटिव बिल्डिंग है थ्रू द मीडिया. So it was a deliberate leak. It wasn't some investigative journalist. There wasn't one choice, and the choice of anchors, especially not just a reporter, that's also tells you something. खास तौर पे वो जो जाहिर है या तो फौजी के करीब समझे जाते हैं या इमरान खान के खिलाफ समझे जाते हैं. सो आई थिंक दोज आर क्लूज दैट यू नीड टू लुक आउट. सो बेसिकली इस वक्त जो बहुत अहम खबर है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, कई बहुत अरसे से तहकीकात चल रही थी साइफर केस की. शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था अगस्त में ही. इमरान खान को भी इस केस में बुक किया गया था फॉर इन्वेस्टिगेशन. देव डिसाइडेड टू चार्ज शीट हिम. और ये भी बता दूं कि जाहिर है जो साइफर गेट्स को कहा जाता है, इसकी जो एफआई ने तहकीकात शुरू की थी, ये जुलाई में ही शुरू की थी. ये कोई पुरानी बात नहीं है. और वी ऑल्सो हैव टू रीड इट अलोंग विद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो अमेंडमेंट भी की गई थी. अब इसमें दो तीन दिलचस्प चीजें हैं. इसमें मेरे ख्याल में कि शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया गया है. एफआईए ने चार्जशीट किया है, दैट्स सिग्निफिकेंट. लेकिन असद उमर को नहीं किया, दैट्स आल्सो सिग्निफिकेंट. आपको याद होगा कि इस बहुत ड्रामाई ये जो पूरी कहानी है, और बहुत लंबी कहानी है, व्हिच इज व्हाई आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मेनी डिटेल्स, बिकॉज इट बिगिंस विद इमरान खान्स जलसा जस्ट बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसमें उन्होंने कागज लहराया था और कहा था कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की है अमेरिका ने. और I think the high points of all of this is that Imran Khan really did successfully build a narrative against America. Absolutely not वगैरह के साथ साथ आपको सड़कों पे भी नजर आए थे. साथ साथ लीक्स भी होती रही थी. आजम खान का लीक आया था, उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी alleged purported audio leaks आई थी, which also tells you that there was narrative building here. We do never know what the origin of these leaks is. आजम खान का एक सिग्निफिकेंट मोड था, हमने उस पर बात कर चुके हैं कि अप्रूवर, ही स्टूड अप्रूवर. वी आल्सो डिस्कस्ड कि जिस तरीके से इसहाक डार नवाज शरीफ के खिलाफ अप्रूवर बने थे, बाद में अपना जो बयान है वापस भी ले लिया था कि अंडर प्रेशर उनको किया गया था. The other thing is just that there's a 28 witnesses submit की हैं, list of witnesses in court, which is quite a significant number. इसमें असद मजीद, who is the co-author of the cipher, वो भी उसमें है, शामिल हैं. सुहेल महमूद हैं, additional foreign secretary फैसल नियाज तिरमिजी हैं, उनको भी नाम witness list में शामिल किया गया है. But I think that जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यही मौकफ है कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, चार्जशीट गलत है, और दिस इज नॉट अ केस. बट जस्ट एज अनदर सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड रिमाइंडर, ये भी याद दिलाएं कि तरीक़ेकार क्या होता है. ये साइफर बहुत सारे आते हैं डिप्लोमेट्स की तरफ से. इनकी 5 कॉपीज बनती हैं, और वो 5 कॉपीज में वजीर आजम, फॉरेन मिनिस्टर, I believe president, and a few others उसमें ज़ाहिर फॉरेन इंटेलिजेंस के होते हैं, उनको दी जाती हैं. इमरान खान ने एक गलती जो की थी, उनका ये कहना था कि ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने मारिया मेमन के शो में ये बताया था कि उनके पास वो कॉपी गुम गई. उसके साथ साथ एक और जो ड्रामेटिक ट्विस्ट हुआ, वो ऐसा एक इंटरसेप्ट नामी अमरीकी एक प्लेटफॉर्म है, न्यूज प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इस पे खबर की थी, इन व्हिच दे क्लेम्ड दैट दे हैड सीन अ कॉपी ऑफ इट. इमरान खान का ये मौकफ सिर्फ नहीं था, इमरान खान का ये भी कहना था कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग थी, मिनट्स ऑफ द साइफर, जो आपको alleged leaks में भी सुनाई दिया था with his conversation with Azam Khan and Shah Mahmood, के वो minutes जो हैं, they were actually the ones that everybody had seen. So it's still a bit of a mystery. इमरान खान कहाँ सच बोल रहे कहाँ नहीं. जो तहकीकात उनसे allegedly हुई थी while he was in Atak jail, he claimed that he stands by his story, और उन्होंने मिनट्स ही दिखाई थी. उन्होंने उसको जो साइफर है, जो एक्चुअल साइफर जो उनके पास होना था, जो अंडर लॉक एंड की होना होता है, वो गुमा हुआ है, which is something that needs to be investigated. This is obviously a very serious case. This may be one of the more serious cases against Imran Khan. जी. And और इस पे that's a summary.
नहीं, थैंक्स फॉर दैट समरी। और उस पे जो सेक्शन लगाया गया है, सेक्शन 5 और 9, उस पे Yes. मौत की सजा भी है, या बिल्कुल। 2 से 14 साल की सजा बामुशक्कत, जो तो कह इट काइंड ऑफ इट काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट रेज रिमाइंड्स होता मी ऑफ राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो ड्रग्स का केस था, मुनशियात का केस था। रिमाइंड्स मी ऑफ द प्लेन हाईजैकिंग केस जो नवाज शरीफ के खिलाफ था। एंड हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पिंडी के जो लीडर थे, उनके पास उन पर भी जो एफेड्रीन ड्रग्स का केस था, दैट आल्सो कैरिड अ डेथ सेंटेंस। सो वेरी सीरियस केस। या और उस पे भी जैसे आपने कहा कि जो विटनेस पे रिलाई किया जा रहा है, अभी केस आगे बढ़ेगा तो देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मेरी जो 2-3 लॉयर से बात हुई, उनका ब्रॉड कंसेंसस यही था कि सीरियस केस है, लेकिन जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है उस पर सवालात उठाए जाएंगे, बिल्कुल उठाए जाने भी चाहिए मेरे नज़दीक तो। और जब ये आगे बढ़ेगा, अगर गिल्टी हो भी जाते हैं तो अपेलेट कोर्ट्स के निज़ाम के अंदर जो है ये चलेगा मसला। और यूजुअली जैसे आपने कहा, इसहाकडार का केस हमारे सामने मौजूद है कि जब वो अपील्स की तरफ टाइम गुजरते गुजरते जाता है, तो विटनेसेस यूजुअली यही कहते हैं कि हमें कोर्स किया गया था। और इसके अंदर तो बनता भी, आजम खान जिस तरह उठाए गए थे और फिर अप्रूवर बन गए, वो सारा हमारे सामने मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स जब वक्त आगे चलता है तो क्वेटा की सर्द हवाएं जो हैं वो फिर कराची की गर्म हवाओं से भी मिलती हैं, तो उस पे भी मफादात जो हैं इवॉल्व होते हैं। So we will see where this goes, but again, in my view, this broad case and the way it's being run is again a symptom of the problem in Pakistan, जिस पे हम इस शो पे काफी दफा बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अंबर, बिफोर गोइंग टू इंडिया कनाडा, एक स्टोरी जो मुझे Can शुरू I में just sort कह of, before we move जी। on to India and Canada, I just do want to say that Imran Khan, let's be very clear. I am not in favor of political victimization, and I do think a lot of these cases tend to be. मगर Imran Khan ने भी अपने narrow political interest के लिए hyped up and played up the cipher case. Oh yeah, And of there's no, course. and to say that that particular cipher or a version or copy of that cipher is missing, it either indicates a great deal of, I'm going to say it, it was just the stupidest statement to make. um, there's a reason कि सिर्फ 5 copies मिलती हैं और खास लोगों को under lock and key, under safe रखा जाता है. So let's also be very clear that Imran Khan has made a lot of errors and mistakes for his own narrow political interests as well. Yeah, I agree, and I think let me make a macro point related to this as well. मेरी कम से कम 3 लोगों से बात हुई है अंबर, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने ये साइफर देखा हुआ है, ठीक है ना। और कैसे देखा हुआ है? कैमरा, व्हाट्सएप पे उन्होंने देखा हुआ है। नाउ अज्यूमिंग, और ये मतलब वो लोग हैं जो इस इनर सर्कल में का हिस्सा रह चुके हैं, राइट। तो ये ऐसे लोग नहीं है कि मेरी सोर्स है, राइट। दिस इज पीपल जो मेरे पास, आपके पास अगर मैं प्राइवेटली नाम बताऊं लोगों को, तो वो समझ जाएंगे कि दीज पीपल कुड हैव सीन इट, राइट, दे वर इन द इनर सर्कल. Now, the problem with something like this is if assuming they are saying the truth, which is that they've seen the cipher on as a picture, these are secret documents. उसका एक पैटर्न होता है कोड का, उस कोड के ऊपर जो है पूरी दुनिया कोशिश कर रही होती है दूसरी ममालिक के इस कोड को क्रैक करने के लिए। अब अगर आपने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है एज रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, कि आपके लोगों ने इस साइफर की तस्वीरें लेके घुमाई हैं, सर्कुलेट की हैं, इसका मतलब ये है, और आप जब मेरे से ज्यादा जानती हैं क्योंकि आप जर्नलिस्ट के साथ काम करती हैं, कि ये इंक्रिप्शन नहीं होती, इसको तोड़ना बड़ा आसान काम है। तो ये जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस जा रहे होते हैं और तस्वीर लोग अपने फोन में रख के घूमते फिरते हैं, these are easily accessible because there is the technology in Pakistan and elsewhere now available to crack these things. तो हाईली लाइकली बन जाता है कि ये लीक हो चुका है और ये फॉरेन इंटेल एजेंसीज के पास आपका अब कोड मौजूद है उनके पास टू बिगिन टू क्रैक द प्रोसेस। तो द मैक्रो पॉइंट ऑन दिस इज कि अगर ये हुआ है, अगर आपसे ये गुम भी गया है साइफर, फॉरगेट अबाउट तस्वीर ली गई हैं और वो सर्कुलेट की गई हैं, तो इट इज अ ग्रोस वायलेशन ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी। नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस। किसी भी सीरियस मुल्क के अंदर ये बहुत सीरियस क्राइम है टू डू समथिंग लाइक दैट। और ये अमेरिका में भी हो चुका है, केबल्स लीक हुए हैं, स्नोडन का पूरा इशू हमारे सामने मौजूद है, चेल्सी मैनिंग का इशू मौजूद है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं एंड दीज आर टेकन वेरी सीरियसली। डोनाल्ड ट्रंप का केस हमारे सामने मौजूद है। तो आई एग्री विथ यू कि एट द वेरी मिनिमम दिस हैज बिन sort of self-inflicted wound for Mr. Khan and his party. Yeah.
Anyway, so we'll see how that pans out. Next, उजैर, इस वक्त जो हमें एक escalation नजर आई थी भारत और कनाडा के दरमियान over the killing of the Khalistani leader, Khalistan movement का जो एक associated leader है. I feel like it reached a peak. India escalated very much, and I think it demonstrated a great deal of confidence coming off the G20 as well. But it sort of dialed back a little bit. And I know you did an interview. If you could just, on that, tell us a bit about that. सो हरदीप सिंह निज्जर की असैसिनेशन होती है कनाडा में. ये ब्रूइंग इशू है. इस इशू के फॉर एग्जांपल अगर लोग पीछे जाना चाहें तो कुछ रीसेंट एग्जांपल्स में जो भारत के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके अंदर भी इस पे कंसर्न हुआ. रेड फोर्ट पे अगर आप गूगल करें तो एक हमला एक तरह से भी हुआ जो उस प्रोटेस्ट के दरमियान. तो ये कनाडा और भारत का इशू जो है पुराना है. ये जाता है ऑल द वे बैक टू इंदिरा गांधी के ज़माने तक in terms of the Khalistan movement. और उस जमाने में तो बहुत वायलेंट थी. तो दिस इशू हैड बीन ब्रूइंग. मैंने जब डॉक्टर नूरुद्दीन से बात की तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया. जो मुझे दो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी और विल गो टू द फुल इंटरव्यू इन जस्ट अ मोमेंट. के नंबर एक के ये ज़रूरी है समझना कि ये बैन अल-अक़वामी इशू से ज़्यादा कनाडा के अंदरूनी सियासी इशू बहुत बड़ा है. ट्रूडो की हुकूमत पार्टनर है एक पार्टी से, उन लोगों से जो एक तरह से खालिस्तान मूवमेंट को पुश कर रहे हैं कनाडा के अंदर. तो एक पॉलिटिकल कंपोनेंट था जिसकी वजह से शायद हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर हो कि वो पब्लिकली इस बात को आगे बढ़ाएं. और दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही वो ये कि अमेरिका जो है इसके अंदर बीच में एक तरह से फंस तो नहीं, इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट इट्स ट्राइंग टू नेविगेट द सिचुएशन. क्योंकि कुछ इंटेलिजेंस अब रिपोर्ट हो चुका है कि वो अमेरिका से गई कनाडा बिकॉज ऑफ द फाइव आई कंसोर्शियम. और अमेरिका भारत के ताल्लुकात पे हम इस शो पे भी बात कर चुके हैं, गहरे होते जा रहे हैं. तो वो नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रीटी एलाय कनाडा और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिससे गहरी रिलेशनशिप की जो है वो कोशिश की जा रही है. तो वाशिंगटन जो है वो एक तरह से कोशिश कर रहा है कि इस टेम्परेचर को नीचे लाया जाए और बात की तह तक पहुंच के मामला सुलझाया जाए. तो डॉक्टर नूरुद्दीन का इंटरव्यू सुनते हैं, फिर आपका भी एनालिसिस इस पे लेते हैं. All right, we have with us Dr. Irfan Nooruddin, and I'll jump right in, Dr. Saab, with you in terms of help the audience understand like what happened here and why, in your view, Justin Trudeau and his government decided to go public with such an allegation, which frankly, the evidence so far they haven't tabled related to what they claim was an Indian assassination on their soil. So let's start with what we think we know, and the emphasis maybe on what we think. We know, obviously, that Mr. Najjar was killed by armed assailants in what appears to be a fairly coordinated and sophisticated attack in June of this year. The Indian origin community, largely Sikh in his community, were pretty convinced as early as that event that India likely had something to do with it. His son has claimed that there was, warnings being given to him by Canadian authorities that he shouldn't travel, shouldn't appear in public because of threats on his life, etc. So there was a narrative building already prior to this that he was a man who was marked allegedly by the Indian government, and then the assassination confirmed for that community a great many of those fears. Now, this is a community that has long rooted in Canada and in Canadian politics in particular, and it's hard, I think, for a lot of people to really understand how powerful the Sikh diaspora is in Canadian politics. And so just a couple of statistics, right? I mean, the Sikh diaspora is about 2.1% of the Canadian population, not large numerically, but it is largely geographically concentrated in Western Canada. And this has allowed that 2% to actually generate a lot of political influence. Canada had the first Sikh defense minister under Trudeau's prime ministership in the first term. In that term, there were as many as 4 or 5 cabinet ministers who were of Sikh Canadian origin. Trudeau boasted that there were more Sikhs in his cabinet than there were in Delhi's cabinet in India. And his current government draws support in parliament from the New Democratic Party, which is headed by a Sikh Canadian, for instance. So the point over here is
to remember that the domestic politics of this are as powerful as any international geopolitical concern. You can't have a vocal minority that is well organized and well empowered feel like your government is not doing something to protect its citizens on Canadian soil. My best hunch of this speculation, but my best hunch is that one is that he was under a lot of pressure to say something publicly because there were other trends that were pointing towards a more positive US Canada-India relationship. There was an FTA that has been long negotiated. Early in October, there was supposed to be a big delegation of Canadian business going to India to look at investment opportunities. If there's domestic opposition to India because of a sense that they were involved in the assassination of Mr. Uzair, you could imagine that the government was coming under a lot of pressure to say, are you with us or not, in ways that could have really undermined the government's longevity. Trudeau's in a lot of trouble at home in terms of just keeping his majority. But the other part of this is this possibility that there was, in fact, some intelligence sharing from the United States as part of the Five Eyes consortium of which Canada is part. And there we have to entertain then the possibility that Trudeau felt a need to come out publicly before that information was leaked, right? Or run the risk of it being leaked. You could imagine that if it had been leaked, that Canada was privy to intelligence linking the Indian government to the assassination, and there had been no announcement of this to Parliament, nothing to the public, that Trudeau's government would have been done, right? Especially if I may interrupt in the context of what you just said, which is a powerful, vocal, organized minority that is already pushing you, are you with us or against us with the deals and everything else? And if you stay mum and you don't say anything and it leaks and you're trying to do these deals at the same time, then it becomes a catastrophe. Then it becomes a scandal that brings down the entire government. There is no saving face on that one. You have to explain why, if you had the intelligence, you weren't doing anything. Why, if you had the intelligence, you were still pursuing deals, etc. And again, this is not just a minority that has concerns, legitimate or otherwise, but a minority that is deeply politically embedded in the survival of your own party, right? I mean, there's so lots of domestic politics concerns over here. Let's also place on the ledger maybe the sense that Canada had been trying to do a lot of this privately. And so there has been reports that the Canadian government had sent high-level representatives to Delhi to talk to counterparts over there, to exchange intelligence, to find out, and that they weren't feeling like they were getting very far with that. So I think at some point the notion that, okay, if we're not getting far with the private consultations, we have to go public, understandable. Why they had to do it when they did it on the cusp of the UN General Assembly week, that, for me, conspiracy theory possibly, but that lends itself more to the sense that there was a ticking time bomb for Trudeau, that a sense that he had better get in front of this story before other people got in front of him. I think that's the best explanation for the timing of it, but the notion that at some point that there would have been a decision to go public, I think that's far more domestic politics kind of story. Let's shift to then the Indian side of the political conversation, right? You mentioned that Canada obviously has a vocal, organized sort of minority of Punjabi Sikhs that are embedded in Trudeau's government. In India, we've seen this sort of the Khalistan Punjab issue come back up in the last few years. I think most notably prior to this incident, it was related to the agri reforms, which led to weeks-long protests in around Delhi. Modi government, which does not like to back down from a lot of things that it wants to do, given the majority it has, in this instance did back down, right? And then sort of said that, okay, we can't go full steam ahead with this agri reform because of the protests in the Punjab. And now, of course, with where the media is and the conversation is at times confusing, because there have been, in my mind, as I followed this, has been focused on, okay, we didn't do this, everybody does this, and now the emerging argument is the ISI did it. And there's domestic politics involved in all three of those arguments. How do you see Delhi's response to this in particular, both in the initial hours and days of this event with Trudeau's allegations, but also more recently with Minister Jaishankar, who is rather blunt at times when he needs to be, has come out to be rather diplomatically
in his statements at CFR in New York, and then his comments to the media, saying that, hey, we've been talking to the Canadians, and if there's evidence, then show us, but this is not our state's policy. So, somebody like Minister Jaishankar who has rather been blunt in the past, has been quite diplomatic. So how do you see things shaping up on the Delhi side of this equation? Delhi is walking a tightrope on this, right? I mean, so let's start with the negatives for Delhi. The timing couldn't have been worse. They had just concluded a very successful, by all accounts, G20 summit, that they were as president, had hosted the world's leaders, including Trudeau, and had come out of it with what appeared to be a major international diplomatic coup, getting a joint statement actually published that managed to deal with the Ukraine issue in ways that really reflected India's ability to build coalitions on the international stage. So well done, right? Then you come to New York, and what you're hoping to do is be riding that wave and that agenda. And instead, my guess is everything in New York that was being talked about India was in the context of this bombshell allegation. They obviously came very, very aggressively in denying the allegations and in taking tit for tat kind of responses. Canada expelled a senior diplomat. India did the same. India went further, suspending the provision of visas and making some statements that frankly just strike me as ludicrous, right? The notion that there would be a travel warning for going to Canada because they couldn't vouch for people's safety. That, I think, speaks to sort of the thin-skinnedness of a large part of the Indian sort of babudom, right, of bureaucracy and maybe even of the society, that sense that, just really escalated to the nth degree as opposed to sit and talk about it. But you're right. The official statements, not the jingoistic stuff that's on every 24/7 news station, but the official statements have tried now to come down in a much more moderate, responsible way and say, listen, we're a democracy. We don't act like this way. It's never been our policy. And we have to keep talking. And I think there we have to think about the emerging stories that some of this intelligence for Canada was actually provided to Canada by the United States. And I think that's a leverage point that will be classified. It will be top secret. You and I will never actually know. But my guess is that a lot of the conversations happening are actually three-way, right? And they might be a triangle. They might not all be sitting in the same room. But I'm guessing that the United States is asking Jaishankar and Prime Minister Modi and NSA Doval and other intermediators to say, we really need you guys to clarify what exactly happened over here, right? Because if this is, in fact, true, we can figure out a way to paper it over, we can figure it out, but it's not going to happen by use of blanket denial and getting upset with Canada, because that's just not going to fly. We know too much. And they're a treaty ally, so it puts us in a bad position. It puts the United States in a very difficult situation, impossible so, right? I mean, in America, of course, it's easy to take Canada for granted, but it is the most significant economic partner for the United States still, in spite of all the globalization, the longest unprotected border in the world. These are deep relationships, and you can't just ignore that. So I think I think of this as being India feeling and its way through a very difficult situation where they have to face vis-a-vis Canada's accusation, right? It cannot be seen to be publicly saying, yes, this had the authorization from the highest levels of the government. So blanket denial, a vociferous response to the Canadian allegation that should play well at home. So you shore up the domestic kind of politics, but now on the international stage, a little more diplomacy, a little more reasoned talk. You send Mr. Jaishankar, he's in the United States right now, as you know, right? Lots of conversations there. I'm sure assurances are being given, either fully sincerely that no, we had nothing to do with it and we're committed to finding out what happened, or maybe we did it, but hey, this was a rogue agent, whatever it is. But I think they have to find a way to make sure that even if Canada is going to stay upset for a while, if only for domestic politics reasons, that you don't lose all the momentum that has been developed vis-a-vis the United States and the deepening relationship, the state dinner in June, and obviously the G20. President Biden took time out of his prepared remarks in New York to reaffirm the friendship with India. It's a lot of momentum going, and I think India is just going to have to make sure to defend that momentum. And I suspect
a large part of the toning down of the language is actually with that part of the geopolitical implications in mind, rather than the Canadian concerns per se. Last question related to this, as you said, three-way conversation, right? Canada, India, and Washington. How would you then, in that context, rate Washington's response to this, right? Because I've also seen and noticed the statements coming out of the White House, the NSA, etc., sort of being very, very cautious, standing firm with Canada, but also at the same time signaling that this, if the Indians did it, it's not okay, in so many words. So from your vantage point, as the US finds itself in this tricky situation with a strategic partner that it wants to deepen relationships with, which is Delhi, and a treaty ally, as you said, the longest unprotected border in the north and a hugely consequential economic partner. If you were to sort of rate and analyze the Biden administration's response so far, have they done a decent job? Would they have done something better over here? Or do you think this is the best that they can do at this point? If we keep the priors of the Biden administration, that India is a critical strategic piece in the larger game that they're playing on the world stage, then I think you'd have to give their response at this point an A+, right? I mean, they've essentially played nicely with Canada in providing intelligence and sharing the intelligence that Canada has used to make this accusation. I'm sure behind the scenes, as assurance has been given to Mr. Trudeau that they are fully committed to the Canadian-US partnership and friendship, but they've done it in a way that doesn't alienate or isolate India, right? So they don't force India on the defensive either, right? So they've managed to keep that quite effectively done. I think the X factor here is whether that prior is worth defending to that level. And I think the truth is that every time such an incident occurs, and this one is by far the most unusual one, right, at least in recent memory, it reopens a set of conversations that both Washington and Delhi would rather not have, which is about India's domestic politics, its human rights record, democratic backsliding, freedom of the press, all that litany of complaints that everyone might acknowledge but would rather not talk about. This just opens it up. It opens up the can of worms about what kind of partner are we really getting when we are working with India. It allows for critics to say, hey, this is a country that's very, very cozy with Russia, that has stood steadfast with Russia through the Ukraine conflict, etc., right? This is a country that has deepening economic ties with China, even while they have lots of concerns China. So if you're somebody who would like to undermine the US-India relationship, this becomes another way to introduce a set of conversations. And in the pages of the Washington Post and New York Times, there were prominent op-eds this week, the pages of The Economist, which has been pretty pragmatic in thinking about the India partnership for the UK, again, raising pretty hard-hitting questions about, hey, this is a reminder that maybe India is not all it's cracked up to be in terms of being a partner, and we should be asking hard questions. So I think on the one hand, yes, the United States, I think, has handled a very difficult situation pretty well. On the other hand, I think it does expose the shallowness of some of the American conversations about where we're headed with this India partnership and whether it's in fact going to be resilient to all of this sort of, ebbs and flows of news that come. I do think the Biden administration, and Uzair, I'd love to get your take on this at some point, but the Biden administration might be the most realist administration we have had in a while. I think, a lot of us, I teach undergrads for a living. You teach them about realism and liberalism, and it's easy to think of a Trump as a realist and Biden as somehow as a Democrat as being more liberal. But the foreign policy of the Biden administration with Jake Sullivan and Tony Blinken and that brain trust has been extremely realist. The MBS in Saudi Arabia is now once again in the fold, a big defense announcement. They're building out the Middle East, India, US sort of a corridor for economic activity. They're building tighter relationships throughout the region because they're very single-minded about China, even as they keep assuring us that it's not all about China containment. And I think that is something that India has understood quite intuitively, that this is a relationship that
will survive some of these, this awkward news. But whether it sustains past a change in administration, whether it sustains past, more such events, that I think is an X factor, and we don't really have that answer yet. No, I think that's well summed up, and I agree with you on the Biden administration's approach and foreign policy on this. And it's one of those things that irks some of my American friends on the left who have issues with MBS and the partnership with India, or some of the rhetoric versus the reality of the policy itself, right? That's right. That they continue to raise and complain about. And I maybe we can end on that. I almost always remind them that, hey, the United States won the Cold War not because it was friends with democracies. Yes, democracies were our friends, but our keenest friends in the most difficult places were some of the worst dictators out there in history, whether it was in Indonesia, in Chile, in Pakistan. The Saudis for the longest time were a very conservative in terms of values, even social values, very against what the United States and Europe stood for. But now they're liberalizing and becoming more progressive in their approach in terms of inclusion of women and all of that. Yes, it's still a monarchy, and yes, there's a lot of challenges there. But my view is the United States has been great friends with the Saudis, for example, in some of the worst periods, if you were to look at it from a human rights point of view, and the role of conservative and radical Islam point of view, right? So I think you're absolutely right that the Biden administration has realized that, yes, democracy is coming close is important, but it is also equally important to see the world as it is, not as we'd like it to be. And that's the challenge of foreign policy, and it gets hard, I think, in today's world, especially with social media and 24/7 news, right, to maintain that balance. And I agree with you; they've done a pretty decent job with that. This is a case in which maybe the strongest thing that can be said for both the Biden administration and for the Modi government is that they both understand the power of not saying anything unless you're forced to. That, that in fact, the notion that you have to respond to everything right away with the full blast of the rhetoric doesn't always play well when you're trying to build a very different kind of world order. And I think right now what we're going to see is a period in which in Canada, there'll continue to be, questions about how Canada can hold India accountable, assuming that the evidence can be preferred to, at least at the highest level of the Canadian government, that action should be taken. And I think you'll see very little of that coming out of Washington. And I would hope that if you're India, you share intelligence as a responsible international partner, but resist the temptation to rise to the bait of, the anti-India faction within Canadian politics, and just sort of, take the high road, if you would. Because the stakes of what they're trying to build with the United States and with the West, I think, are far greater than any points that could be scored by sticking a finger in Canada's eye at this point. Yeah, I couldn't have said it better. So thank you, Dr. Nooruddin, and it's a pleasure to always have you on, and take care. And my pleasure, Zach. Congratulations on the pod, and looking forward to seeing it. Thank you. So Amber, आपने सुना Dr. Nooruddin की conversation. What stuck out to you when you listened to him explain what's going on here? So broadly, जो इसके बारे में मैंने पढ़ा था, I did understand that domestic politics had a lot to do with it. But I did not realize or recognize actually कि जो Sikh जो diaspora है Canada में, उसके कितने ज़्यादा गहरे असरात हैं Canadian domestic politics पे, and why. And I think that an indication was कि तमाम जो सियासी जमातें Canada में हैं, चाहे वो जिस whatever spectrum they were part of the spectrum they belong to, they supported the Trudeau government. I think the second thing that struck me as well was that there was actually effort, because I think effort in terms of resolving this without going public, but the timing of it was something that I thought was great. And lastly, how the US is trying to sort of navigate this. I think it's also a lesson in treading a fine line between obviously a long-term neighbor and a trade partner, as well as a country that is also doing more business with, not just in terms of business, but also in terms of international politics. So, yeah.
this is great sort of take on this. और उसमें And भी जैसे डॉक्टर नूरुद्दीन ने कहा, आपकी कम्युनिटी का एक किरदार है इसमें भी, कि वो इमिनेंट लीक जो आने वाले का खतरा था ट्रूडो की हुकूमत को, कि ये कोई जर्नलिस्ट जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ना शाया कर दे कि ट्रूडो हुकूमत बैक चैनल कर रही है और बात खुल के नहीं कर रही इस मामले के ऊपर। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था डॉक्टर नूरुद्दीन का, कि अगर वो लीक हो जाता और ट्रूडो जो है उस पर बात पहले नहीं करते तो उनकी सरकार जो है वो खतरे में पड़ जाती। तो ये आपकी मीडिया के जो लोग हैं ना, इन्होंने भी प्रेशर किया कनेडियन हुकूमत को ये मामला छेड़ने पे। Yeah, well, that's our job, right? And I think how they handle it is obviously the government is the government's choice. मगर अगर कोई मामला है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर मेरे ख्याल में कि ये सहाफियों का काम ही होता है कि वो प्रेशर डालें, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, इसके मामले के तह तक पहुंचे। जी बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग था। एनीवेज लेट्स सी वेयर दिस गोज, बट आई थिंक जो उनके वजीर खारजा हैं भारत के, वो भी डीसी में थे। आई थिंक कोशिश की जा रही है बात को आगे बढ़ाने की। आखिरी टॉपिक बिफोर गोइंग टू नाजुक मोर अंबर, जिसपे आई थिंक मैंने इंट्रो में मैं भी भूल गया बात करना, इस हफ्ते मस्तूंग में टेरेबल अटैक, रिमाइंडर अगेन कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट दीज डेज। 50 से ज्यादा लोग मारे गए। तालिबान ने बड़ी क्विकली डिस्टेंस किया इस अटैक से, क्योंकि ईद मिलाद नबी का अटैक था। हंगू में भी अटैक हुआ। आई थिंक दिस इज अगेन वेरी क्विकली आई जस्ट से कि ये सिग्नल है प्री इलेक्शन रनअप में कि हालात ख़राब होते नज़र हमें आ रहे हैं। और मुझे तो हमेशा इन मामलात पे, पर्टिकुलरली पिछले 1-2 साल से जब ये अपटिक हुआ है वायलेंस में, तो स्टैनली वुलपर्ट की किताब जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान का एक एक्सेप्ट ही याद आता है, जिसपे वो लिखते हैं कि 1965 की जंग में जब पाकिस्तान को मालूम नहीं हुआ कि भारतीय टैंक्स आ रहे हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो अयूब खान राइटफुली सो बड़े गुस्सा हुए। तो उनके इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने कहा कि सर, इंटेल की गलती इस वजह से हो गई कि आपने हमें टास्क दिया हुआ था कि सियासी सरगर्मियों पे नज़र ज़्यादा रखी जाए। तो बस मैं इतना ही कहूंगा इस पे कि जब जो है 65 में भी ऐसे ही मसाइल थे और 2023 में भी लगता है ऐसे ही कुछ मसाइल चल रहे हैं। I mean, okay, let's also just recognize that there are obviously many terrorist groups जिनको for various reasons जिनकी अभी तक presence है या इसमें इजाफा हो गया है, they have obviously a political agenda, and they're going to exploit the insecurities within Pakistan, and it is hard. You get a lot of intelligence about potential attacks, कुछ जिनके बारे में पता भी नहीं चलता. And I'm just playing the sort of devil's advocate here. I don't want to sort of generalize this. Absolute tragedy. खास तौर पर जाहिर है जब ऐसा मजहबी त्यौहार भी हो, अमन की बात होती हो, और उस दिन ऐसा हो गया. Going back to the media, actually, it's also a far cry from the way the media used to cover stories like this, especially a big story. And I What's know your that take on this कि क्यों नहीं कवरेज हो रही from your उनको perspective? instructions मिलती हैं to play it down. And that is a choice that media organizations have made. अब उसका problem ये है, of course, that I think that people who want to be informed through television, खास तौर पे क्योंकि उनकी ज्यादा तादाद होती है, शायद उनको ये एहसास हो कि ये शायद इतना बड़ा मसला नहीं है. So it reduces the importance, it normalizes the attacks because they don't happen in areas. Imagine अगर ये ऐसा ही अटैक खुदा न खास्ता कराची में होता, कुछ एक्सेस की बात होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन की बात होती है, आपको ज्यादा कवरेज जरूर दिखाई देती, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स की मजबूरी भी हो जाती है, उनकी ऑडियंसेस होती हैं. And I think that's a real tragedy. I believe कि उस दिन, I mean, there's also been another attack on मियां वाली में हुआ है. 2 टेररिस्ट अटैक्स ने किया था मियां वाली में एक पेट्रोलिंग पोस्ट पर. So it tells you कि as I said, political agendas. I think the thing about Mastung to note is that there are no obvious culprits at this point in time. जी, और वो जो एक तरह से आई थिंक आर्मी चीफ का भी बयान आया, मैं एक और वीडियो भी देख रहा था, वो कह रहे हैं ख्वारजी हैं और इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, और पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों की प्रॉक्सीज हैं ये।
तो वही टिपिकल जो हम पहले भी सुनते आए हैं कि ये लोग मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलके जो है इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, वही लॉजिक आर्ग्यू की गई है। एक इंटरेस्टिंग मेरी कॉन्वर्जेशन कल हो रही थी, पर्टिकुलरली ऑन दिस ख्वारिजी व्यू के ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अब जो आ रहा है, पहले भी कोशिश की गई थी। आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क इन द सेंस के किसी भी रेडिकल राइट या लेफ्ट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दिस ग्रुप इज, इन दिस इंस्टेंस ये रेडिकल राइट विंग इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं, उनको आप आउटराइट नहीं कर सकते इस्लामिक आइडियोलॉजी के तहत। ये हम पहले भी ये प्रॉब्लम पहले भी देख चुके हैं। इनफैक्ट अब ये प्रॉब्लम तरीका अफगान तालिबान का भी हो चुका है कि वो भी घबराते हैं कि उनके राइट पे अब रेडिकल साइड पे आईसिस आ चुकी है, दाइश खुरासान आ चुका है। तो वो भी अब फिगर आउट करने के हम कैसे वो काउंटर करें उस आइडियोलॉजी को, क्योंकि अमरीकी तो चले गए। तो अब उनको कहा जाता है कि ये पक्के मुसलमान नहीं है, दाइश वाले पक्के मुसलमान हैं। तो दाइश अफगानिस्तान में भी अटैक्स कर रही है, और पाकिस्तान में जैसे हमने देखा कि रबीउल अव्वल के जैसे मौक़ों पे या आशूरा के जैसे त्योहारों पे अटैक्स की थ्रेट आती है, बिकॉज यू कैन नॉट आउट राइट द राइट रेडिकल विंग इन माई व्यू इन दिस इंस्टेंस, बट द आर्मी स्टिल ट्राइंग टू डू एंड मेक दैट आर्ग्यूमेंट। आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। Yes, also जाहिर है इस वक्त इट्स नॉट जस्ट मतलब रॉ पर भी इल्जाम लगाया गया है, बलूचिस्तान में खास तौर पर, और कराची में भी जब होते हैं रॉ, द हैंड ऑफ रॉ इज आल्सो ब्रॉट अप। और ये भी याद दिलाते चलें कि जब इससे पहले जब अफगान तालिबान की हुकूमत नहीं थी, तो अफगान इंटेलिजेंस जो इदारा है उसका भी नाम लिया जाता था, जो अब नहीं लिया जाता। So we never really sort of understand how these groups are made and formed. Obviously, just a shout out to Khurasa Diary and others जो इनकी जो formation alliances हैं उन पे tweet भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं. But I think that the significant issue at the moment is, and I've had this conversation with lots of politicians जो जिनका ताल्लुक उन इलाकों से है जो इस वक्त militancy के ग्रुप में हैं, जिसमें KP है and some बलूचिस्तान। रिपोर्टिंग नहीं हो पाती एज वी टॉक्ड अबाउट, बट ऑल्सो मुतनब्बे भी जो किए जाते, जिनके बारे में किया जाता है, कहते हैं पॉलिसी नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी in any of this. Obviously there's no parliament भी नहीं है, एक national security committee भी नहीं है, so even if we try to get information from these sources वो इस वक्त नहीं है। So yeah, I'm glad you mentioned it because I had sort of made a note of it. तो आगे बढ़ते हैं नाजुक मोड़ की काउंटडाउन की तरफ। काउंट हम रख नहीं रहे, बट आई हैव अ कपल एंड देन आई हैंड इट ओवर टू यू अंबर। आई थिंक मेरा एक जो इस हफ्ते बिकॉज ऑफ द न्यूज़ कवरेज केम टू माय माइंड वो सलीम शहजाद। अगर लोगों को याद नहीं, जर्नलिस्ट थे, उनको किडनैप किया गया, देन ही वाज फाउंड डेड। He was reporting on some very sensitive issues of that time, including terror attacks at a naval base, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि शायद उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उठाया। वो नाजुक मोड़ इसलिए था अंबर, दो वजूहात के लिए मेरे दिमाग में आया। एक तो ये कि ऑब्वियसली फाइनली थैंकफुली इमरान रियाज खान हैज मेड हिज वे होम आफ्टर ओवर 140 days ऑफ बीइंग मिसिंग। और उनकी तस्वीर देख के और लोगों के रीड आउट सुन के, मंसूर अली खान ने फॉर एग्जांपल एक वीडियो लॉग किया उनकी मुलाकात के बाद। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू सी एंड हियर what Imran has gone through, despite all of the disagreements you and I may have with what he said, did in the past. I think no human should go through what he has done. Visibly नजर आ रहा था। तो वो जब मैंने देखा तो मुझे सलीम शहजाद याद आया, क्योंकि वो एक नाजुक मोड़ था पाकिस्तान की मीडिया की तारीख में मेरे नज़दीक। एंड आई वुड लव योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल। कि एक टेरर अटैक होता है, उस जमाने में बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी सिक्योरिटी की, आज से बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल थी, और एक जर्नलिस्ट अपना काम करता है, तहकीक करता है, और तहकीक करके शहरियों को, दुनिया को बताता है कि हुआ क्या इस अटैक के बाद, इस अटैक में, और उसके बाद वो मिसिंग हो जाता है और उससे अल्टीमेटली जो है वो मर जाता है बेचारा। और वो एक नाजुक मोड़ मेरे नज़दीक इसलिए था क्योंकि पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी हुआ, इराक वॉर में अबू गरीब हुआ, ये सारी चीज़ें कवरेज हुई। तो मीडिया और जर्नलिस्ट, इस तरह के लोग, सलीम शहजाद टाइप के लोग, वो उजागर करते हैं लोगों को मसाइल से, और फिर एक कॉन्वर्जेशन होती है और फिर पॉलिसी आपकी इवॉल्व करती है। लेकिन जब ये हो कि वो तहकीक करने वाला जर्नलिस्ट गुम हो जाए और फिर मार दिया जाए और उसकी लाश बरामद की जाए, तो फिर आपका जो एक पूरा प्रोसेस है ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का, पॉलिसी एवोल्यूशन का,
वो स्टंट हो जाता है। और ये हमने फिर देखा, हामिद मीर पे भी अटैक हुआ, अबसार आलम पे हुआ, मतीउल्लाह जान के साथ उठा लिया गया, असद अली तूर के साथ जो हुआ, और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हमें मालूम याद भी नहीं, और ये बढ़ता बढ़ता चले गया। अब इमरान रियाज की भी जो है उनके साथ मिसिंग हुए वो 100 दिन से ज्यादा के लिए। तो And let's नाजुक not मोड़, forget Arshad Sharif. या अरशद शरीफ की किलिंग केनिया में, यस थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट। तो एक पूरा चिलिंग इफेक्ट होता है मीडिया के ऊपर, और जब मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर दी जाए इधर थ्रू सेल्फ सेंसरशिप और कोअर्जन, तो फिर आपकी जो पॉलिसी कॉन्वर्जेशन है मुल्क की वो स्टंट हो जाती है, और उसका नुकसान बहुत दूर तक मुल्क को देखना पड़ता है। तो आई वांटेड टू रेज दैट सलीम शहजाद केस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दैट इज गोइंग ऑन टुडे एज द फर्स्ट वन। आई थिंक द सेकेंड वन जो मुझे याद आया वो था कि एक ज़माने में मुशर्रफ का दौर था ये। पाकिस्तान फौज के एक जर्नैल थे जिनकी तस्वीर भी गूगल पे लोग करें तो मौजूद होगी। वो हार पहना रहे थे कुछ तालिबान को और उनको पेट्रियाटिक पाकिस्तानी कह रहे थे। तो वो भी एक नाजुक मोड़ था कि इन लोगों को समझा जाता था, और अभी भी कुछ जो हैं हल्के हैं पाकिस्तान में जो इनको समझते हैं कि ये पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं या असल मुसलमान हैं और ये हमारे भाई हैं। वो भी एक मुझे याद आया बिकॉज द मस्तूंग अटैक टुडे, कि कितना कुछ नहीं बदला पाकिस्तान की कॉन्वर्जेशन के अंदर, कि अभी तक वही कंफ्यूजन है कि तालिबान क्या हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। तो वो एक जो विजुअल है वो मुझे अभी तक याद है, और लोग गूगल भी कर सकते हैं जाके, उनको मिल जाएगी कि पाक फौज के जर्नैल जो हैं वो हार पहना रहे हैं एक ऐसे ग्रुप को जिसका खून जिसके हाथों पे पाकिस्तान के शहरियों और बच्चों का खून है। Yeah, no, Salim Shahzad pe a very quick take. Obviously, as you pointed out, I was a reporter and actually a producer. I wasn't even working as a reporter at that time. Part reporter, part producer. Islamabad में BBC के साथ थी, and I think the two things I'd like to say is कि इन मामलात के हकायक कभी भी सामने नहीं आते, which is unfortunate, which we see happening in Arshad Sharif's case and Imran Riaz's case as well. Salim Shahzad Commission का कुछ parts leak किए गए थे, या एक बहुत अच्छा सहाफी है उसको मिले थे। हामिद मीर की जो अटेम्प्ट थी assassination की, अटैक था, उसमें भी कमीशन बनी थी, उसकी भी रिपोर्ट कभी भी लोगों के सामने नहीं आई। And if you talk to them, if you talk to Hamid Mir privately, he will tell you as well. But it's not my story to give; it's his. He's chosen not to talk about it. यहाँ भी इमरान रियाज खान क्योंकि बहुत दिलचस्प इसमें wording थी, which was about कि किस तरीके से पुलिस ने, I think सियालकोट पुलिस, इन्होंने उनको रिहा किया गया था, but we never heard कि किससे रिहा किया गया था। अरशद शरीफ का अगवाकार केस कौन है ये हमें नहीं मालूम, कभी मालूम कभी, भी नहीं और वो होगा। नामालूम अफराद जब आप कहते हैं तो फिर लोग खुद ही समझ जाते हैं, which is much worse by the way. दूसरी तरफ अरशद शरीफ का केस भी हम देखें कि क्योंकि लोग सामने नहीं आ रहे, विटनेसेस नहीं आ रहे, इवन जो उनकी one of his wives was then declared an absconder because उनको दावत दी जा रही थी, and including his one of his producers as well, उनको भी absconder declare किया गया था because they weren't appearing. So essentially that has now obviously become a cold case. उसका difficulty or issues जो हैं in terms of independent international investigations, Kenya में भी just I think commission और एक क्या committee थी, I don't remember, investigation जो कर रहे थे, वो भी उसका कुछ अता पता नहीं है। जो पुलिस अफसर जो इसमें इन्वॉल्व थे in the shooting as well, उनको भी कहीं और पोस्टिंग उनकी हो गई है, कहीं प्रमोशन हो गई है, so it's really died down, and I think that is actually the biggest tragedy. And I think that actually brings me to another one, एक और नाजुक मोड़ जो हमने डिस्कस नहीं किया, which is उसामा बिन लादेन पर जो मारा गया था, वो भी बहुत बड़ा नाजुक मोड़ था। और उसका जो इब्तिदा थी बहुत ड्रामाई थी, क्योंकि एक ट्विटर नया नया पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हुआ था, कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और एबटाबाद में एक शख्स था, एक शहरी था, जिससे ट्वीट करना शुरू कर दिया कि कुछ लाइटें हैं, कुछ शोर है, कुछ धमाके हैं, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही थी, and he was posting about it, and that's when everybody realized what happened after the story broke। और वो बहुत मशहूर आपके साबिक सदर ओबामा का जब तकरीर आई थी, and those reaction videos with Hillary Clinton in that room as well.
पर आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए खास तौर पे था, डिनायल्स आती रही थी कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन व्हेन दैट वाज आल्सो sort of आई वुड से कि मीडिया के लिए एक बहुत अच्छा वक्त था, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया के लोग और जाहिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत थी, उन्होंने बहुत तहकीक की थी। शकील अफरीदी का जो किरदार था उसकी भी कवरेज हुई थी। And I was I still remember when his daughters and his brother were here in Islamabad, उनको safe house में रखा गया था, उस तक रसाई मुझे भी मिली थी, बातचीत हुई थी, I managed to put that story out. So there was a great deal of coverage, and it also demonstrated how the fact that how the army, it was at one point, that was one of the points where was on the back foot. सलाला भी उसी दौरान में हुआ था, मेमो उसामा बिन गेट पूरा होता है, उसके बाद एबटाबाद कमीशन, Laden. बिल्कुल। And the commission report, Asad Hashim हमारा दोस्त भी है, he got a few pages out of that जब वो commission की report आई थी, but that's all we knew about it. Again, another commission that sort of died. Was those the commission report was buried. So ये मेरे लिए, I think, just as on a related note, just on commissions and what happens and how we don't get the truth. Yeah. I think that to me एक नाजुक मोड़ था. And just on a sort of lighter note, हमारे एक Twitter follower भी है, and somebody who's been watching. I'm just going to sort of try and see if I can dig out the quote, but his suggestion was कि हम जब बहरिया टाउन establish किया गया था, वो हम एक नाजुक मोड़ consider करें 1997 में, जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा 1997. So जबरदस्त that's a सजेशन थी। shout out, just a shout out to that. मैंने भी देखी थी वो ट्वीट, दैट वाज ऑन पॉइंट। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड कैच। 1997 बहरिया टाउन नाजुक मोड़। अंबर, इसका जो उसामा बिन लादेन के जो आपने शकील आफरीदी की बात की, अगेन ये नाजुक मोड़ पे ही एक तरह से इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में इसके ऊपर कांग्रेस अभी तक बात करती है कि आपने उसको रिहा करना है। जो डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसके अंदर जो कुछ 1 2 4 5 लाइनें बेसिकली अब तो रह गई हैं पाकिस्तान की असिस्टेंस के ऊपर, तो उसके ऊपर भी एक तरह से 60 या 70 मिलियन डॉलर का एक क्लॉज है कि ये उस वक्त तक रिलीज नहीं होंगे या दिए जाएंगे पाकिस्तान को जब तक शकील आफरीदी को रिहा नहीं किया जाता। तो अमेरिकी कांग्रेस अभी तक जो है कोशिश कर रही है डॉक्टर शकील आफरीदी को लेकिन इसके रिहा बावजूद करवाने की। कि हमें इतने पैसों की जरूरत है, डॉलर रिजर्व चाहिए, हमने इस वक्त अभी तक रिलीज नहीं किया। एंड आई नो दैट हम आई वाज एट द बीबीसी उर्दू एट दैट टाइम, हमने बहुत स्टोरीज की थी, रियली एक्सक्लूसिव स्टोरीज ऑन शकील आफरीदी। आई विल पॉइंट आउट कि गिवन जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम के रूप में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी ऑन Osama bin Laden's whereabouts, it also had a very massive impact on the polio campaign in Pakistan. You saw an escalation of cases because a lot of people thought that अटैक्स भी होना शुरू हो गए थे जी। attacks भी होना शुरू हो गए थे. So it was partly used an excuse and partly क्योंकि पाकिस्तान भर में मालूम था कि ये रिपोर्टिंग हुई थी कि CIA ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत ये information collect की थी. A lot of it gave extremist groups a reason and an excuse to resist the polio campaign. So there was also that direct impact जो हम अभी तक भुगत रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी आज तक 2023 में उन ममालिक में शामिल है जहां पोलियो एंडेमिक है। एंड ममालिक 2 ही रह गए हैं अंबर, अब सिर्फ नाइजीरिया में भी खत्म हो गया है। हाँ नहीं, नाइजीरिया में खत्म हो गया। इंडिया वेरी सक्सेसफुली eliminated polio, I think in about 5-6 years ago. So नाजुक मोड़, उसके repercussions अभी तक आपको नजर आ रहे जी, हैं। और उस पे एक आखिरी टंग इन चीक पॉइंट कि आप देखें इतनी निकम्मी बाइडेन इंतजामिया है अंबर के, रेजीम चेंज करवा दिया और अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान से निकलवा लिए यूक्रेन के लिए और अपनी हुकूमत भी ले आए, लेकिन वो बंदा जिसे कांग्रेस पे आप अगर कांग्रेसमैन से और वुमेन से बात करें तो कहेंगे डॉक्टर शकील आफरीदी इज अ पेट्रियट एंड एन अमेरिकन हीरो। इतनी निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन है कि सब कुछ करवाने के बावजूद शकील आफरीदी को नहीं निकलवा सकी। तो ये Well, भी अजीब I tell you, कहानी है कि आप देखें। it tells you कि ये जो अमेरिका की मदद जो करता है वो फिर लैंग्वेज ही करता है। हम how many presidencies have we seen
I think we've had two Obama, we've had one Trump, and now Biden का भी खत्म हो रहा है दौर. शकील आफरीदी को रिलीज नहीं कर पाए. बिल्कुल. अब देखें, डॉन लू असद मजीद से भी मिले, एम्बेसडर मसूद खान से भी मिले, यूक्रेन के हथियार भी निकलवा लिए, लेकिन डॉन लू ने बात तक नहीं की शकील आफरीदी की. ये तलाशी जो है वो लेनी चाहिए अमरीकी अवाम को डॉन लू से. और देखें कि ये अमरीका कितना जो है वो डिसलॉयल है अपने लोगों के साथ, कि कांग्रेस कह रहा है छुड़वाओ बंदे को, और बाइडेन इंतजामिया ने कोशिश तक नहीं की. हुकूमतें आप गिरा देख दी लें लेकिन बंदे को नहीं छुड़वाया. आप देख रहे कि वहां अमरीकी पार्लियामान भी, उसकी भी कितनी अहमियत है. बिल्कुल बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. विनर्स एंड लूजर्स, व्हाट्स Winners ऑन योर and लिस्ट? losers. Okay, so I will say the winner on my list is actually I'm going to commit to I dislike मैं जो चीफ जस्टिस हो, वजीर आजम हो, वजीर हो, एक्सेट्रा, उनको लिस्ट पे डालने के लिए. बट आई विल से कि द विनर दिस वीक फॉर मी हैज बीन जस्टिस काजी फाइजी सर अगेन. फैजाबाद धरना केस जो अगेन वाज इन कोल्ड स्टोरेज, उसकी रिव्यू पिटिशंस फाइल की गई थी. चीफ जस्टिस आए और गए, जिस तरह के आपके अमरीकी सदूर आए और गए, और किसी ने उस केस को उठाया नहीं. और अब तो हाल तो ये हो गया है कि सबने अपनी पिटिशंस विड्रॉ कर दी. रह कि कौन गया ये बता दें, बाकी कौन रह गया? एमक्यूएम का वकील पेश नहीं हुआ. शेख रशीद इस वक्त जाहिर है लापता अफराद में उनका शुमार हुआ है, तो उनका भी कुछ पता नहीं. बट एमक्यूएम पेश नहीं हुआ. जो फेडरल गवर्नमेंट है, एंड आई लव दिस सॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग. तो अटॉर्नी जनरल से पूछा था जस्टिस काजी फायजी सा ने, चीफ जस्टिस काजी फायजी सा ने, कि किसने आपको हुक्म दिया था कि आप इसे विड्रॉ कर दें. वो बता नहीं सके. तो क्या आप कुछ बताएं तो सही कि पहले आपने हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने पिटिशन दायर किया था और आप विड्रॉ करें. तो लेट्स हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस. सो टू मी खलाई खलाई मखलूक से कोई दावत है? ना एग्जैक्टली कोई बात है, बस नाम हम लेने से डरते हैं. तो वो ये आई थॉट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सचेंज. पीटीआई ने विड्रॉ कर दी. और किस किस ने विड्रॉ आईबी ने विड्रॉ कर आईबी ने विड्रॉ कर दी. आईबी ने विड्रॉ कर दी. सो यस, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग, इट्स अ बिग स्टोरी. 1 नवंबर को उसकी नेक्स्ट हियरिंग है. सो ही इज परस्यूइंग दिस केस. पेंडेंसी के हवाले से भी ही इज मेड अ बिट ऑफ अ डेंट एंड हैज फॉर्मुलेटेड अ प्लान जिसमें जजेस को केस मैनेजमेंट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जो पेंडेंसी वाले केसेस है, केस मैनेजमेंट करने की एक plan process तैयार किया है. and you see some result of that. So for me, he is a winner for this week. Loser for me is our caretaker prime minister, जो 12 दिन के एक लंबे अरसे के दौरे के बाद, अक़वाम मुत्तहिदा पे तो हमने बात की थी पिछले हफ्ते, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब, लंदन, पेरिस, कहाँ कहाँ वो नहीं गए. उसके बाद पूरा उन्होंने फुल अपना फॉरेन टूर किया. एंड बेयर इन माइंड कि अभी मस्तुंग में भी जुमे के रोज ये अफसोसनाक दहशतगर्द वाकया भी हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो for me he's a bit of a loser for this. एक सवाल एक बहुत बड़ा बना था कि शायद आईफल टावर पर अपने खानदान को लेकर गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसकी वजाहत कर दी कि नहीं, आईफल टावर के टॉप ऊपर पे नहीं खाया था, उसके साए तले जो है. एक परचम के साए तले हम एक हैं, तो एफिल टावर के साए तले उन्होंने खाना खाया था. हाँ, तो वो बस हम ये वो एक पॉपुलर फ्रेज है ना, कहा जाता है ना कि वो आग लगी है बस्ती में, निगरान वजीर आजम अपनी मस्ती में. तो उन्होंने फुल फायदा उठाया जितना उनका अरसा होगा. तो उन्होंने एक दौरा कर, मैं निकाल ही. जी बिल्कुल. तो मेरा भी लूजर ऑफ द वीक यही था. आई विल जस्ट ऐड टू दिस इंफॉर्मेशन कि आपने आईफल टावर का कहा, एक और इंफॉर्मेशन आई कि वो लंदन में किसी महंगे बुटीक में शॉपिंग करने भी गए थे. नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, कोई ब्रूनो या ऐसा कुछ नाम है. उस बुटीक के अंदर एक बार और रेस्टोरेंट भी है जो कि बड़ा महंगा है. तो हो सकता है वहाँ पे उन्होंने हाई टी भी की हो या लंच वंच किया हो शॉपिंग करते हुए. हमारे एक दोस्त हैं, जब उनकी तस्वीर वजीर आजम साहब की आई इन्वेस्टर ग्रुप के साथ, वो लंदन में मिले, तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इस तस्वीर के अंदर देखो अरबों डॉलर के इन्वेस्टर्स जो फंड्स मैनेज करते हैं वो लोग खड़े हैं, लेकिन सूट सबसे अच्छा हमारे निगरान वजीर आजम का है. तो मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, सूट उनका वाकई बड़ा अच्छा था. और फिर मालूम हो गया कि क्यों अच्छा था, क्योंकि उनके शौक बड़े अच्छे हैं सूट्स की क्वालिटी के हिसाब से. तो वो भी सामने आया. और आखिर में अंबर उम्रा करने वो जब गए तो उनकी कुछ तस्वीर
शाया हुई नमाज पढ़ते हुए। मुझे तो एक तरह से बड़ी, जो भी करता है बड़ी अजीब सी लगती है तस्वीर कि आप किसी लीडर की नमाज पढ़ते हुए, खाना काबा में हो गया या मदीना शरीफ में हो गया, वो लगाते हैं। लेकिन इनकी जो एक तस्वीर थी वो एक इवन फॉर दैट स्टैंडर्ड एक तरह से आई कैचिंग थी। लोग ट्विटर पे और सर्च भी कर सकते हैं कि वो तस्वीर जो पब्लिश की गई उसमें वो नमाज पढ़ते हुए रो रहे हैं। And again, people do cry when they're praying. They have a connection in those holy places in many parts of the world. लेकिन strategic communications को इस हद तक लेके जाना कि वो specific तस्वीर आपने लेके चलाई, I think it's beneath anybody to do, in my humble opinion, कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ है, आप नमाज पढ़ें, आप उसकी प्राइवेट रखें तो बेहतर है, ये लेकिन क्या सिग्नलिंग तो के लिए। एक तो शीर करना, I mean that just it tells you that it's not for faith but for promotion. Exactly. So I echo double down loser of the week for me is the caretaker prime minister. I'm I also think going to say my I have another loser actually. And I'm going to say that Nawaz Sharif is my loser of the week because बहुत उनका स्टेटमेंट आया कि जनरल फैज और जनरल बाजवा एहतसाब होना चाहिए, और फिर अचानक से शहबाज शरीफ वापस दोबारा जाते हैं, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से और सागडार ने एक ऐलान किया कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम उम्मीद की बात करना चाहते हैं और नया नैरेटिव है. And just on that note, PMLN is also kicking off a series of meetings, and they're building up a momentum for Nawaz Sharif's return. But I think U-turn. This is clearly a U-turn. तो winner for me this week, Amber, is somebody जिस पे मैं हर दफा कोशिश, मेरी लिस्ट में थे, मैं भूल जाता था. इट्स अ बिट आउट देयर, लोगों को शायद मालूम, कुछ को हो, शायद आपको मालूम ना हो. इज मिखाइलो फेदोरोव. मिखाइलो फेदोरोव जो हैं वो यूक्रेन के इस वक्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं. And he's also has served as deputy prime minister in Ukraine as well. And he was now basically to deputy prime minister for innovation, education, science and technology. इस वक्त इनका जो टाइटल है इस हुकूमत यूक्रेन में. 1991 में अंबर पैदा हुए थे, 21 जनवरी 1991. तो 32 साल की इनकी उम्र है. और ये बेसिकली यूक्रेन में जो ड्रोन वॉरफेयर की मॉडर्नाइजेशन हुई है, जिसने एक तरह से, अगर आप जंग फॉलो कर रहे हैं, तो यूक्रेन की ड्रोन स्ट्रेटजी ने रशियन फ्लीट को एक तरह से पैरालाइज कर दिया है. हर दूसरे दिन हम सुनते हैं वेव अटैक होता है छोटे ड्रोन्स का, और बड़ी इनोवेशन हुई है इस एरिया के अंदर. तो मिखाइलो फेदोरोव इज द जार फॉर दिस एंटायर स्ट्रेटजी. और एक 32 साल के नौजवान वजीर ने जो है रशियन फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी एंड द वे ही इज रन हिज टीम. तो आई थिंक ही इज द विनर टू मी इन दैट सेंस के हम बात करते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका में भी ये बात होती रहती है. अभी इस हफ्ते डायन फाइनस्टीन का भी इंतकाल हो गया कि पुराने जो बूमर्स हैं वो जाने कोई तैयार नहीं है, जगह छोड़ने कोई तैयार नहीं है नौजवानों के लिए. पाकिस्तान में भी इस पे बात होती है, दुनिया में हो रही है ये बात जनरेशन शिफ्ट के ऊपर. तो मिखाइलो टू मी स्टैंड्स आउट एज अ सक्सेस स्टोरी इन दिस इंस्टेंस के 32 साल का नौजवान वजीर बनता है और उसकी थिंकिंग क्रिएटिविटी ने जो है दुनिया में जंग लड़ने का जो तरीका है एक तरह से उसको बड़ी जल्दी तेजी से इवॉल्व करवाया बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप. एंड आई थिंक ही इज अ विनर नॉट जस्ट फॉर दिस वीक बट ऑफ द वॉर इटसेल्फ. आई वांटेड टू शेयर दिस story of a 32-year-old drone czar who's giving Russians a run for the money. Oh, that's a really good one. And I'm thinking, मुझे तो आपका थोड़ा सा एक जाती मफाद भी नजर आ रहे हो उज़ैर. आप तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, renouncing your अंबर इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जो ना ही बनाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है ये इस पे कोई गेन नहीं होना इस सिचुएशन के अंदर. आप जो है मेरा तो मानना यही है कि बाहर ही बैठे रहें तो बेहतर है. अंदर जाके जलालत के अलावा और कुछ नहीं मिलना और कुछ बचा नहीं है. नहीं और कुछ देखिए बचा नहीं है. आपने देखे एफबीआर ने कहा है कि दे हैव एक्सीडेड टारगेट्स.
उस पे भी That's बात करेंगे अगले हफ्ते. इन्फ्लेशन का डेटा आ जाए, इस हफ्ते आने वाला है, तो उस पे आई विल एक्सप्लेन टू द पीपल कि ये किस तरह एक्सीड हुआ टारगेट और क्या इसकी You are रियलिटी a है. prophet of doom. You are a prophet of doom, Uzair. And maybe एग्जैक्टली. it is best that you don't become finance minister. एग्जैक्टली. तो मैं फिर जो है आंखों में आंखें डाल के जो है वो घबराहट ही दिलवाऊंगा पाकिस्तानी अवाम को अगर वजीर गलती से बन गया. But I think on that note, people should read about Mikhailo and the work he's done and the Ukrainian way of war with drones itself is fascinating. For those who want to study and understand innovation and defense, it's very important to look at that war. But on that note, I think this is our show for this week. Again, keep sharing Nazuk Moors with us. इस हफ्ते का हमने शाउट आउट दिया 1997 बहरिया टाउन. ऐसे कोई और यूनिक से आपके दिमाग में नाजुक मोड़ हैं तो प्लीज कमेंट करें, बताएं हमें. And we will be back next week. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.